to the second podcast of BNI exclusive. And I'm more than thrilled today to host somebody so humble and a true domain expert in the manufacturing of furnitures, Mr. Vikram Gupta. Namaste. Thank you, Gaurav bhai, for giving a brief. So, Vikram bhai, we can start with what actually inspired you to create a brand like Flexi? What problem you saw in the industry that you thought, boss, this is the line which I want to get into? Right. So this happened in disguise. This was never planned, and I never wanted to get into a industry like this. I'm a car fanatic guy, and I love automobiles, and that is where I wanted to be. But coming from a very humble family, and my father being in the Indian Army, so he always wanted कि भाई बेटा भी फौज में जाए. And so I was pushed to get in the army. So after my NDA, 6 years under SSC program, I served the army. After becoming a rank of a major, I retired, took a VRS, and got into the civil background. Had a lot of hurdles, and post that hurdles, finally, got into opening a company like this, which I never thought that we will make it to the level where we are. Um, yes, the time was very crucial and it was a very hard pressing because it was a 360-degree dimension change for me as a character, where एक फौजी रहता है और फौजी से सीधा एक सिविल लाइफ में आके यहाँ के अलग चैलेंजेस को देख के अपने आप को मॉड्यूलेट करके आगे बढ़ाना is was a tough task for me because that was a major characteristic internal change, and then subsequently adapting myself to how the industry works. So yeah, I mean, after that, I saw a big gap in the market when I installed myself into this background. I realized that number one, there was a very big gap of educating the client what the product is, how is the product made, and how can the product designs and dynamics can work better to the client in terms of the aesthetics, in terms of the quality requirement, and the very important crucial part was the pricing. So when we entered the market, we understood what the need of the client would be. I must tell you, Gaurav bhai, that when I entered the market, I could see only one kind of revolving chairs everywhere, and that was blue color. किसी के भी ऑफिस में जाओ तो ब्लू कलर की चेयर दिखती थी, और वो एक ही टाइप का डिजाइन सबके यहाँ दिखता था, और सबके पास तीन प्रॉब्लम हमेशा रहती थी कि वो चक्के टूट जाना या चक्के नहीं चलना. दूसरा एक प्रॉब्लम होता था कि वो चेयर को अगर ऊपर नीचे करना है तो एक नॉब घुमाना पड़ता. एंड Correct. तीसरा पॉइंट था कि डिजाइन डायनेमिक्स थे ही नहीं, जो बना दिया वही लेना पड़ेगा. Hmm. एंड देन आई थॉट आई शुड ब्रिंग इन अ रेवोल्यूशन. सो गौरव भाई, भैया आपको शायद नहीं है मालूम होगा या कई लोग को पता नहीं होगा, वी आर द फर्स्ट वंस इन ईस्टर्न इंडिया टू ब्रिंग mesh chairs जो आज की डेट में commonly यूज हो रहे हैं. We were the first ones in the industry, Super. Super. and when we got them to the industry, it was not accepted, and those were black color chairs. And the biggest buyers in our industry is the Marwari clients. Hmm. उनके लिए ब्लैक कलर मीन्स अरे बाप रे भाई, जो शनि की प्रोडक्ट ले आए, कैसे हम इसमें बैठ सकते हैं, ये नेट क्या होता है, ये तो फट जाएगा, Ah, गद्दी क्यों नहीं. सो इट देयर वाज अ टर्मोइल इन फ्रंट ऑफ अ बिग रॉक, इसको तोड़ के आगे निकलना. तो बी दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड एजुकेटिंग. हमने बहुत पैसे लगाए, हमने बहुत सारे आइटम्स इंपोर्ट किए थे, 3 साल तक हमारा माल नहीं बिका. whoa. एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड कि यार आई थिंक द कैलकाटा इज नॉट वांटिंग टू अडैप्ट द चेंज. I तो see. हम वही बेचते हैं जो वो लेना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पैसे का काम तो पैसे से ही होगा. True. So to survive in this industry, we had to make what the client wanted. Got So it. then we started venturing out, Mm-hmm. and we saw an adaptation in the other market beyond Calcutta, or Mm-hmm. rather beyond West Bengal. और वहां पे इन लोग को डिजाइन डायनेमिक्स पसंद आया, Mm-hmm. आर्किटेक्ट्स को पसंद आया. तो Right. जब वहां चलने लगा तो बंगाल में लोगों ने रियलाइज किया यार वहां पे बिक रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं बिक रहा है. एंड Correct. देन स्लोली स्लोली द चेंज स्टार्टेड कमिंग इन, एंड वो डायनेमिक्स यहाँ पे हमने बहुत जोर शोर से चालू किया.
मुझे एक खबर मिली थी जब हम लोग ये काम कर रहे थे, जो हमारे वेंडर्स होते हैं जो हमें फोम सप्लाई करते हैं या एक्सवाइजेड, वो बोलते हैं सर ये फ्लेक्सी कौन सी कंपनी है कि इन नो टाइम आया और मार्केट में इसका पूरा नाम होने लग गया है। कौन है ये बंदा जो इतना एग्रेसिवली नए नए मॉडल्स आ रहा है, हु इज राइट, दिस गाय। तो राइट। सुन के अच्छा लगा बिकॉज ऑब्वियसली हम कंपटीशन में थे और अपने बारे में कोई थोड़ी सी तारीफ करता है तो अच्छा ही लगता है किसी को भी, तो ट्रू। हमें भी काफी अच्छा लगा। बिल्कुल। बट विद दैट ऑल्सो गेव अस अ बूस्ट कि हमें बहुत मेहनत करनी है आगे जाने के लिए, बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी है। तो दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इन आवर लाइफ। सो हमने अपने डिजाइन को चेंज किया। हम जो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो आइटम्स मिलते थे, वी स्टार्टेड गेटिंग द सेम थिंग इन इंडिया। सो हमेशा क्या होता था कि बाहर पहले एक एक आइटम आता था, 4-5 साल बाद इंडिया में आता था। या। तो यस। हमने वो गैप को काफी रिड्यूस किया। So सुपर। the reduction was only 1 year or maybe few months. वहां हम्म। कुछ निकलता था विद इन 4-5 months हमारे पास, हम उसको ले आते थे और फिर उसको हम मार्केट करते थे। आई मस्ट ऑल्सो टेल यू वी वर द फर्स्ट वंस इन बंगाल टू मैन्युफैक्चर रिक्लाइनर्स। वाओ। पर जितने रिक्लाइनर्स होते थे या तो वो इम्पोर्टेड आते थे करेक्ट। या वो दिल्ली या बॉम्बे के कोई वेंडर से या बैंगलोर के वेंडर से कोई आता था। वी द फर्स्ट वंस टू प्रोड्यूस रिक्लाइनर्स हियर। Then we were the first ones in Bengal to produce cinema chairs, or for that matter, auditorium chairs. There was nobody in Bengal. जो भी थे वो बॉम्बे और दिल्ली में ही थे. And that time there were only 3 people in entire India producing it. I वाओ। was the fourth person who got this model here, and we again changed the dynamics. राइट। And lastly, we were the first ones to break the price carrier. इसी पहले अगर आपने कभी देखा होगा, एक टेलीविजन में एक रेवोल्यूशन आया था एक हम्म। जमाने में। टेलीविस्टा और कई सारे टेलीविजन अवेलेबल थे लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती थी। करेक्ट। फिर एक जब बीपीएल आया तो थोड़े कलर टीवीज ले आया, थोड़े डायनेमिक्स, बट वो भी एक्सपेंसिव थे। हाँ जी। अकाई और आईवा आने से उन्होंने प्राइस को तोड़ा। आई स्टिल हम्म। रिमेम्बर बीपीएल के टीवीज या ओनिडा के टीवीज उस जमाने में 25,000 30,000 में मिलते थे, एंड अकाई और आईवा आने से उन्होंने सीधा 10,000 में टारगेट किया। हाँ इट्स द जी। सेम थिंग वी आल्सो डिड विद आवर प्राइसेस। हमने about 40% difference prices में better quality में हमने product दिया, and I think that is where you know we scaled up. That's a pretty interesting journey and too many firsts in your journey. आप ईस्टर्न इंडिया में कई हैसियत में, कई सेगमेंट में एंड कई पैरामीटर्स में आप फर्स्ट रहे, विच इज एन इंस्पायरिंग थिंग। बट आई वांट टू हैंडपिक सम ट्रबल मोमेंट्स, कुछ Yeah, ऐसा के जर्नी में कुछ गलत चला गया हो और आपने टर्न अराउंड किया हो, अपने व्यूअर्स के साथ कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहोगे? yeah. So since I was not from a business background, तो obviously हमें कोई सिखाने वाला कोई था नहीं कि business कैसे करते हैं. But I was always inclined of not working in कच्चा. So I think हमारी इंडस्ट्री में I was one of the very few who would do product selling only in taxes. तो वो हमारे को दिन भर ट्रेमर्स आते थे। दूसरा था वी यूज्ड टू ट्रस्ट आवर क्लाइंट्स मोस्टली। तो मटेरियल चला जाता था, हमें बोला जाता था पेमेंट मिल जाएगा, एंड दो फॉलोअप्स यूज्ड टू स्टार्ट। और फिर कभी कभी 20 दिन में आ रहा है, कभी कभी तो 35 डेज, और कभी कभी तो बियॉन्ड। सो वी लर्नड दैट मिस्टेक कि आई थिंक इफ यू वांट टू सर्वाइव एट रीजनेबल प्राइसेस जो हम माल बेचते हैं, फॉर अस फॉर रनिंग अ फैक्ट्री यू नीड फंड्स इमीडिएटली, यू कांट गिव देम क्रेडिट्स अनलेस इफ यू सेलिंग एट अ वेरी हाई मार्जिन। हाँ जी। सो दैट वाज वन ब्लैकआउट, तो वो हमने सबसे पहले उसको रेक्टिफाई किया। हम्म। सेकंड था टैक्स रिफॉर्म्स। हम अंडरस्टैंड नहीं करते थे। हमें टैक्स में माल बेचना आता था, बट टैक्स सबमिशन कैसे करते हैं, हम्म। ऑडिट कैसे होती है, वो चीजें हमने अंडरस्टैंड नहीं की थी। द बिहाइंड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हमें पता नहीं था। गॉट इट। उसमें हमने बहुत मिस्टेक्स करी और फिर हमारे पास स्क्रूटनी आए हम्म। एंड कुछ केसेस आए, ट्राइब्यूनल में गए, एंड देन वी अंडरस्टूड द ट्रिक्स ऑफ टैक्सेशन। हम्म। वो बहुत बड़ा मैटर था, उसी से पैसे बनने देखिए। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते शायद हम थोड़े बहुत पैसे नहीं बना पाते। एंड व्हेन वी अंडरस्टूड द डायनामिक्स ऑफ टैक्सेशन ऑन आवर प्रोडक्ट, राइट। I think then that bought the game. And lastly was, uh, you know, जिसको कहा जाता है चतुर। हाँ। हम चतुर नहीं थे। We हम्म। were सिर्फ hard workers. हम्म। हम्म। We realized if you want to survive in the market, you have to be चतुर. हम्म। Because if you're not चतुर, कोई आपको मार के आगे निकल जाएगा. So I think in the journey हम चतुर बनने की बहुत कोशिश किए, and I think वो चतुर एक ही तरीके से मतलब बहुत तमाचे खाए, बहुत बॉक्सिंग खाया, and then that's where we learned the tricks and yeah. सुपर, सुपर।
So बस bounce back is the right thing which all the viewers should take it away from this. चाहे वो compliance हो, चाहे वो हर एक चीज में how विक्रम्स जर्नी so inspiring उन्होंने डेवलप किया है. विक्रम, आपको आगे क्या लगता है नेक्स्ट 5 to 10 years में how do you see the furniture manufacturing industry evolving? So markets are very dynamic. The changes are extremely dynamic. And so I feel in times to come, the competition is going to grow manifold. The prices of products may become at a substantial price where it is affordable. So now there'll be a furniture will be affordable at a good quality. There'll be an affordable luxury and there will be a ultra premium luxury. जो currently ये सब चीजें अभी बहुत सारे लोगों के दूर हैं. Those were the days when I think you and I were born, Gaurav. उस वक्त हमारे माता पिता एक स्कूटर से कार लेने में सोचते थे. बट आज की डेट में कार मेजोरिटी उनके पास है. एक जमाने में टेलीविजन बहुत कम होता था लोगों के घर में. आज की डेट में लोगों के घर में 3-3, 4-4 टेलीविजन है. Same is the story of our furniture. The same thing is going to happen in that revolution. Got So it. we have to be prepared for this kind of a competition is coming because the larger brands, international brands for that matter, will pump in a lot of money to India. They will bring their big uh, manufacturing units, big setups. New designers will be evolved in creating dynamics of new design parameters with cost analysis, and a new product grade will be developed. So that market is coming in, and we see a sea change in our product line. Interesting. And what do you see? You always say that आप बाकी भी cities में enter कर रहे थे apart from Eastern India. So what is your process of launching new products or entering new markets? So we first understand the need of that sector. So I'll give you a hypothetical example. So हम बॉम्बे में penetrate कर रहे थे. So in our industry, Mumbai is the fashion hub for furniture. कि वहाँ आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि ये आइटम लगेगा और वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ऑल लार्जर कंपनीज और बिग फॉर्मेट कंपनीज विल हैव आर्किटेक्ट्स और सीनियर कंसल्टेंट्स फ्रॉम मुंबई. They would probably flow down to either Delhi office or Bangalore head office और वहां पे प्रोडक्ट अप्रूव कराते थे और उसके बाद मटेरियल पूरे इंडिया जाता. So what used to happen when we used to meet the architects, since we had done our homework, we knew what the demand was in that sector. We got that product at a reasonable price with a more flexibility in terms of supply chain management, in terms of pricing, in terms of uh, uh, managing the turnaround time for making that product, and versatility in terms of consumption, design change, and any other variable that may be at that time. And I think that also gave us a boost. And since at that time it was not a very big competitive area, we had some fantastic designs to talk about. So people used to get impressed with our design line. And I think that is where it gave us. And plus, of course, we were also extremely aggressive to sell and get orders. So I think ये दोनों तीनों चीजें in line थी बोल के things changed for us. Get it, get it. And that was the dynamics in all different parts of India. Okay, okay. And how do you position Flexi in the market to stand out from competitors? आपका क्या branding secret है? जो आप follow करते हो या marketing trick है जो आप follow करते हो for Flexi's branding? So there is no trick as such, to be honest. I think one is that we are very, very transparent to our client as to what we are giving him. We are very honest with our pricing. And three, we are always constantly changing the demands. Whatever the demand is coming, we are trying to abbreviate ourselves to that demand and make a genuine product and also educate our client. And I think because of all this, and of course, better after sales service too. And I think quality has been the biggest mantra for us. We have been very consistent with our quality, although there were a lot of up and downs initially. The quality come do, price come kar do, maal le lenge and all of that. But I think we didn't budge from there. We were consistent. So I think that is one of the reasons why our positioning became better. So there's no trick as such. Superb. So consistent quality deliveries
is the only mantra for you Absolutely. to be ahead of your competitors. Yes, yes. And what are those qualities which you see when hiring a new person for Flexi? See, I think it's not only about hiring for Flexi, it's about hiring for anyone. So I think the first couple of things which I personally look at and a human who's going to be a part of our family is whether do they have fire in them to do something better for themselves. If they don't have the fire, how much ever I push them in whichever category of field they want to join in, it will be very difficult to take out an output. Number two, whether are they really conscious about their life and their upbringing, they really want to make it big in terms of career, not in terms of money. Because someone who's only coming to earn money will earn money in whichever way form. And that's not the monthly we are looking at. And three, most importantly, is he a family oriented person? Is he stable in his mind? If these three things don't match, we can't be a part of that. So, we've been very fortunate that God has been very kind to make us learn certain tactics of how to absorb people. And I'm being very proud to say that, we have our attrition ratio is very, very negligible. Our attrition is at only one place, which is sales. तो वो सब जगह है तो हम लोगों को भी लगता है चलो ठीक है we've done a job better. But besides sales हमारे पास ज्यादातर लोग काफी टाइम तक टिके हुए हैं. बहुत सही, बहुत सही. Because team only makes it big Yes, altogether. You being yes. the major of the show. And जैसे BNI की अगर अपने बात करें, so what was your initial perception before joining BNI, and how has that changed after being a part of BNI exclusive? It's an interesting question, but very simple answer. I was not well networked. So when I was being told by the promoter of BNI Calcutta कि ऐसा सा होने से ऐसा सा होगा, तो हमने बोला भाई हमें तो नेटवर्किंग चाहिए. And so gone into the same bandwagon. एंड उसके फ्रूट्स हमें इमिजिएटली मिलने चालू किए बिकॉज जब वो नेटवर्क में मिले तो नेटवर्थ बनता गया. एंड कई सारे हमारे रादर आई वुड से बिसाइड्स नेटवर्थ हमने बहुत कुछ सीखा भी बिकॉज जितने promoters of other companies are also becoming the business owners जो है वहाँ पे who are becoming the members, you're learning from them each day. So I think that was one very big change कि besides doing networking I also learned a lot from many people, which includes you also, Gaurav. I have also learned a lot of things. वो behind camera बात करेंगे. And I'll be happy to share that also to you. And I keep learning every day. So I think the journey has been very nice with this networking platform. Interesting. And if I talk about, you should give some advice to all the viewers, mostly entrepreneurs in the audience. What would be that piece of advice for first time entrepreneurs or even players who are already in the business? They feel, boss, I am stuck. कहीं ना कहीं growth नहीं हो पा रहा है या city wise I am still feeling paralyzed. What is that piece of advice you will give sitting on Flexi chair to all the entrepreneurs? I am no one to advise, but yes, as a friend or as a pathfinder in my business life, I have earned few points, and that is what I would want to give from my chair. First is that discipline is extremely required in your life. If you don't have the right discipline in your personal life, your professional life will not have a discipline. Once you have a professional discipline in yourself, you will have the mind to ideate to what you want to do for yourself in future. Once that is falling in place, you would know exactly how to go with the target. Consistency, honesty, and most importantly, dynamics in yourself to keep adapting yourself with time and to see around what's happening with your competition. If if I do not have the first point of that discipline, none of these things can actually fall in place. And lastly, educating yourself for every step so that you are not far behind. That's all.
Great insights, Vikram. I mean, straight coming, you guys, all the viewers, whoever is listening or hearing this podcast, watching this podcast, try and take out some time to learn, adapt, and all these things should follow a proper regime discipline as well. I personally have known Vikram from last 2+ years.